a very warm welcome to the class, guys. I really hope that you guys are doing well. And I again want to apologize for what happened yesterday. कल आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए हमारी क्लास जो है वो चलो ज़ाया हो गई, ठीक है. बट कोई बात नहीं, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, फाइन. सो वील बी फोकसिंग ऑन नोमैडिक एम्पायर्स, ठीक है. तो चलिए, कल हमारा फिनिश क्या हो गया था? वी वर डन विथ रोमन एम्पायर एंड टुडे we start with nomadic empires. All right. Now, like if you just take a look at this name, right? Nomadic empires. Now, don't you think they are very contradictory of each other? एक दूसरे के इतने contradictory हैं ये, isn't it? Because nomads are supposed to be people who keep moving from one location to another. दे आर नॉट सेडेंट्री, है ना, वो मोबाइल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल सेटअप. They have a very tribal kind of social setup, isn't it? And then these tribal kind of social setup establishing an empire. जब ये लोग एक empire establish कर रहे हैं तो empire जो है वो exactly opposite है to what? It is exactly opposite to what the nomads are, isn't it? Nomads are tribes, guys, ठीक है? They keep moving from one location to another, okay? वो एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते रहते हैं, ठीक है? Fine. So when they are moving from one location to another, how are they supposed to establish an empire which needs you to stay at one location? है ना. तो अब देखो कि बहुत ही एक लाइक टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये टू एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है जिस पे हमें फोकस करना है, ठीक है. सो व्हाट वी हैव हियर इज नोमैडिक एम्पायर्स, फाइन, एंड दिस इज व्हाट वील बी फोकसिंग ऑन. सो एरिया ऑफ फोकस जो है वो क्या है? सो एरिया इज सेंट्रल एशिया एंड वी आर फोकसिंग ऑन मंगोलियन ट्राइब्स, ठीक है. तो हम इस पे ही जो है वो फोकस करने वाले हैं, ठीक है. फाइन. नाउ whenever we start with a new chapter, I always tell you it is important for us to know the kind of source material which is present to understand this empire, ठीक है. तो वही हम अभी उसी चीज पे फोकस करेंगे कि हमारे पास what sources do we have for this particular chapter that we are studying, ठीक है. क्या sources हैं हमारे पास, चलिए हम वो देखते हैं. Okay, so चलिए. Now guys, you all know that Mongols are what? They are tribes, isn't it? So don't you think that they will keep moving from one location to another, है ना. हमेशा ही एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते रहेंगे, right? So when they're moving from one location to another, do you think that they would have produced any kind of literature for themselves? Not really, ठीक है. So the steppe dwellers, as they have been called, they did not produce any literature as such, ठीक है. तो जो भी हमारी knowledge है regarding what? जो भी हमारी knowledge है regarding these nomadic empires is actually coming from a third person perspective, ठीक है. So
ठीक है, तो हमारी जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रही है? हमारी जो नॉलेज है वो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आ रही है, ठीक है। तो जो भी अदर लोग हैं जिन्होंने दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स, दे हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स और क्रॉनिकल्स एक्सेट्रा, our knowledge about the Mongols is particularly through them only. Fine, ठीक है। Now, okay. So ये जो authors हैं, जिन authors पर हमने अभी बात की है, they have produced what is known as a very ignorant and biased report. Fine. What have they done? Produced ignorant and biased report. Okay. तो बहुत ही एक इग्नोरेंट और बायस्ड रिपोर्ट उन्होंने प्रोड्यूस की है। फाइन, प्लीज अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे, दे कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड आवर वे ऑफ लिविंग, है ना वो हमारी भाषा समझ पाते थे, ना वो हमारी वे ऑफ लिविंग समझ पाते थे, ना वो हमारे रिलीजन को समझ पा रहे थे, ठीक है। दे वर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? What did the Britishers do? The Britishers have always produced a very biased perspective regarding us, है ना, कि हम barbarians थे, हम uncivilized थे, unruly, savage. These are the words which have been used, ठीक है, fine, all right. But so अब बहुत ही ignorant और biased perspective है, fine. But with the success of Mongols, the Mongols, even though they were tribal societies, they had succeeded in what? They had succeeded in establishing themselves as, तो वो किस चीज में successful रहे guys? They were successful in establishing themselves as what? Successful in establishing themselves as an empire. And an empire which was even greater than the Alexander the Great, ठीक है। इतना बड़ा, मतलब कॉन्टिनेंट्स कवर कर रहा है उनका एम्पायर, रोमन एम्पायर से भी बड़ा है, ठीक है। सो व्हेन द मंगोल्स वर सक्सेसफुल, फाइन, इट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स, ऑलराइट, ओके। सो success of Mongols okay, so it attracted scholars from where? From diverse backgrounds, ठीक है। तो कुछ इसमें क्रिश्चियन, टर्किश, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे थे, ठीक है। ओके, सो जैसे ही मंगोल as an empire was successful, number of scholars who were coming from various backgrounds, guys, ठीक है, they have started getting attracted towards Mongol, ठीक है, तो वो attract होने लग गए and they wanted to write about the Mongols, fine, all right. सो अब इनके साथ ना एक प्रॉब्लम थी, ओके, प्रॉब्लम क्या थी कि ये जनरली दो स्पेक्ट्रम्स में बात करते थे, फाइन। So these scholars, they were mostly talking in what? They were mostly talking in two spectrums, ठीक है। अब ये दो स्पेक्ट्रम में क्या था, ठीक है, तो देखिए गाइस, या तो ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव थे, फाइन, positive in the sense that they have literally written ideologies, fine,
of these Mongol rulers. So they were either extremely positive, fine, or they were extremely negative. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि या तो ये extremely positive हैं to such an extent that they have literally written eologies of these Mongol masters, fine, or to some extent they would be completely hostile. ठीक है, वही सेम barbarians हैं, savage हैं, unruly, this and that, fine, okay. So यहाँ पे आप देखोगे कि even those scholars interested जरूर हैं, but they have this two spectrum theory, fine. और कोई भी चीज गाइस देखिए बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती है, देयर इज ऑलवेज सम ग्रे शेड्स इन बिटवीन, फाइन. सो सबसे वैल्यूएबल रिसर्च जो है वो मंगोल्स के ऊपर कब किया गया था? दिस वाज डन इन रशिया इन द 18th and 19th century with the Tsarist regime. Okay, so सबसे अगर वैल्यूएबल रिसर्च की बात करें तो वो कब प्रोड्यूस किया गया था? दिस वाज डन इन द Tsarist regime in the 18th and in the 19th century. Fine, all right, okay. लेकिन यू नो व्हाट, इसके साथ भी इस जो लिटरेचर है इसके साथ भी एक इशू थी. एंड व्हाट वाज द इशू? इट वाज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी colonial mindset. ठीक है, so issue with this was produced okay, so this was produced from a very colonial, you can say, और from a very imperial mindset. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा colonial imperial mindset से इसको प्रोड्यूस किया गया था. सो ऑब्वियसली गाइस ये लिटरेचर जो है वो भी एक तरीके से क्या है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बायस्ड. फाइन, ऑलराइट. नाउ it was in the early 20th century, fine, when the Soviets have expanded to these new areas, that we have the development of what is known as your Marxist ideology. ठीक है, सो क्या हुआ 1819 में जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया है दैट हैज अ वेरी colonial और imperial mindset. फाइन, बट लिटरेचर produced in, sorry, so this gave rise to what? Marxist historiography, guys. ठीक है ना, इससे पहले ना कि हम आगे बढ़ें, फाइन, आई डू वॉन्ट टू एक्सप्लेन what Marxist historiography is. ठीक है, just give me 1 second guys, let me just tie my hair, बहुत गर्मी हो रही है. Let me see the mic also. हाँ, माइक तो ठीक है. सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े ना, लेट मी एक्सप्लेन
what this Marxist historiography or what this Marxist philosophy is. ठीक है, चलो. So Marxism बेसिकली एक फिलोसफी कह लो, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है देखा जाए तो. फाइन, दिस इज जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन द इकोनॉमी. सो दिस वाज गिवन बाय मार्क्स एंड एंगल्स. ठीक है, ठीक है, ये दो स्कॉलर्स थे, दो इकोनॉमिस्ट कह लो. दे आर द वंस हु हैव गिवन दिस थ्योरी. फाइन, तो इनके हिसाब से मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेन कर रही हूं. एनी सोसाइटी, ठीक है, एनी सोसाइटी विल गो थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. फाइन, जैसे हम लोग एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं, वैसे ही इट विल गो थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ 3 स्टेजेस. व्हाट इज स्टेज 1? स्टेज 1 इज दैट ऑफ capitalism. Okay, capitalism is what we have, right? Because our society, the money is actually in the hands of elites. Okay, so capitalism का मतलब क्या होता है guys? Capitalism मतलब होता है जहां पे पैसे जो हैं वो elites के हाथ में हो. ठीक है, where is the money? The money is in the hands of the elites. First of all that. Secondly, there is a lot of social differentiation over here. Fine, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत resources होंगी तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल resources नहीं होंगी. Fine, so money is in the hands of the elites. Also, there's a lot of social difference which is there. Fine. After this, the next evolution phase is communism. Now, कम्युनिज्म में क्या होता है? कम्युनिज्म यू विल सी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. दिस आई एम श्योर कि आप समझते हैं. इफ यू हैव डन रशियन रेवोल्यूशन, यू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ओवर हियर? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. फाइन, और जो पावर्स है वो एलिट्स से शिफ्ट होकर के किसके पास जा रही है? द पावर इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम द एलिट्स टू द वर्किंग क्लासेस. ऑलराइट, सो पावर अब किसके पास है? पावर पहले यहां पे कैपिटलिज्म में एलिट्स के पास होती थी. ठीक है, नाउ द पावर डायनामिक्स हैज शिफ्टेड एंड दे हैव शिफ्टेड इनटू द हैंड्स ऑफ द workers, right? And there is an equitable distribution, which means that suppose I have 10 acres of land and I don't need those 10 acres of land. Suppose I only need maybe 7 acres of land. Okay? Then the 3 acres of land that I have extra is going to be distributed amongst those who have nothing. ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर वो उनको distribute किया जाएगा. ठीक है, this is what communism is. All right? And then what we have, the next what we have is socialism. ठीक है, now socialism को ना generally एक utopia कहा जाता है guys. What is utopia? Utopia is something that is unachievable. Fine, utopia is something that you can imagine, लेकिन आप उसको शायद achieve करना या उसको reality में साकार करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, so this is what socialism is. Now in socialism everyone is equal. Fine, हर कोई जो है वो बराबर है. मैं आपके बराबर हूं, आप मेरे बराबर हैं. So everyone is equal and that is why this has been called as a utopia. Why? Because don't you think this is something unachievable? How can you achieve this equality? कि सब बराबर है वाली equality आप कैसे achieve कर सकते हो? ये काफी मुश्किल है, right? And I don't think it's actually very possible to do also, isn't it? And if when you have everyone equal, your society is going to cease to exist, isn't it? You're going to go back into the prehistorical times where everyone was equal, isn't it? तो इसीलिए इसको यूटोपिया जो है वो कहा जाता है. फाइन, तो आप एक चीज देखो यहाँ पे, ये क्या कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी, सिंपल शब्द में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है, ओके, तो चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, whatever is our economy is going to have a deep impact on the kind of society that we have. And that's absolutely true, isn't it? कि जिस तरह की हमारी इकोनॉमी होगी उस तरह की हमारी सोसाइटी भी होगी. ठीक है, फाइन. So you have, so I hope you've understood this. Fine.
So 20th century, we have the production of Marxist historiography. Okay, fine. So according to the Marxist historiography, the Mongols were transitioning from what? Okay. Mongols कहाँ से transition कर रहे हैं guys? Mongols are transitioning from where? They are transitioning from what? From a classless society, because they're tribals, they're equal, ठीक है? So from a to almost capitalism, ठीक है? तो उनका कहना था कि वो from a classless society, they are almost transitioning into what? They are almost transitioning into capitalism. ठीक है? Fine? All right. Okay. सो बहुत सारे रशियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छी बुक्स प्रोड्यूस की हैं. फाइन. सो वन सच स्कॉलर, सो वी हैव वैसिली बार्टोल्ड. ठीक है. ऑलराइट. Now, Vasily Bartold is a scholar, Russian scholar who has written about the Mongols, and he has a very sympathetic and a positive opinion towards Genghis Khan's career. Okay? What he has? A positive and what? ओके. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि वैसिली बार्टोल जो हैं वो रशियन है गाइस. ठीक है. व्हाट इज ही इज अ रशियन. ऑलराइट. नाउ रशियन स्कॉलर जो हैं वो अगर if they're writing good about the Mongols, they're actually praising their enemy. And why are the Mongols enemy? Mongols जो है वो enemy इसलिए है because Mongols have taken over Russia as well and has made Russia into a part of their empire. Fine. So it was like Vasily Bartold if Vasily Bartold was suppose Indian, he was actually praising the Britishers, right? So same cheese यहाँ पे Vasily Bartold ने की. He was praising, he had a very positive and a sympathetic attitude towards Genghis Khan's career, and ये उनके दुश्मन है. क्यों दुश्मन है? Because Mongols have ruled over Russia. Fine. ये भी आप आगे जाकर के देखोगे. ठीक है. So he obviously had to face a lot of, you can say, censorship. Fine. All right. Now, it was only in the 1960s that he was able to publish his 9 volumes. Okay. So, his book, fine, was published in 9 volumes when? In the 1960s. Okay, fine. All right. Now, guys, also understand that the transcontinental span of the Mongols का क्या मतलब है कि Mongols जो हैं, they have a transcont, just like the Romans were ruling over 3 continents. Similarly, Mongols had a transcontinental empire, right? They were not just covering Asia, but they were also covering Eurasia and parts of Europe as well. Okay? So because they have a transcontinental empire, whatever sources are available about them, they have been produced in various languages. Okay? So,
So what languages are there? So we have Chinese, Mongolian, Persian, Arabic. ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वो भाषाएं हैं जिसमें मटेरियल को जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, कभी कभी एक ही चीज को, एक ही बुक को दो अलग अलग भाषाओं में प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, फाइन। सो समटाइम्स इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द मंगोल एंड चाइनीज वर्जन्स ऑफ ठीक है, तो कौन सी बुक है? द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। ठीक है, एंड दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन 2 लैंग्वेजेस व्हिच इज चाइनीज एंड मंगोल्स। ठीक है, ओके, वी ऑल्सो हैव अदर स्कॉलर्स गाइज। मैं उनके नाम जो है वो लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ गाइज? दिस इज वेयर वी हैव फिनिश्ड आवर सोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गए हमारे सोर्सेस टू स्टडी द एम्पायर। फाइन, सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, क्विकली टेक देम डाउन। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, I'm sure this is done. So just take this down और फिर हम लोग सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे चलेंगे। All right, so I am sure that we are done with this. ठीक है, सबका ही हो गया होगा ये तो। Okay, so now we move ahead to discuss the social and political background. चलो भाई, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइस? सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ दीज nomads. Fine. So
See guys, they are tribes, isn't it? So they're definitely a diverse body of people, fine, but they have, language and ethnicity connection. As in, even though they are diverse, है ना, जैसे Indians हैं, हम एक बहुत ही diverse country हैं, ठीक है? We have different religion, different culture, different beliefs, different festivals, but still there is some connectivity between us, and that is in the form of our nationality, है ना? हम क्या हैं? हम एक कनेक्टिविटी में रहते हैं. हमारा कनेक्शन क्या है कि हम इंडियंस हैं, ठीक है? सो सिमिलरली दे वर diverse, ठीक है? But they had similarities. They had ethnic and they had language similarities, ठीक है? So what have we learned about the first thing? They were a diverse body having language and ethnic similarity, ठीक है? Fine. What else? We also know that they had connections, or you can say they had lineage connections, or you can say they had connections to the Tatars, Khitan and Manchus. ये सब क्या है? ये सब भी tribes हैं, and the Mongols had connection to these tribes, ठीक है? Okay, so they were connected to okay. सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इनका इन ट्राइब्स से, यानी कि मॉन्चूज, टाटर्स, खितान्स, और फिर कह लो कि इन ट्राइब्स से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन है, ठीक है? So since we're talking about social and political background, we also have to know about the economic activity that they were following, ठीक है? So what was their main economic activity, guys? तो एक तो हो जाएगा कि they were pastoralist, दूसरा हंटिंग गैदरिंग, ओके? ये क्या है? ये इनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है? ऑलराइट. ओके, सो दीज आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. टू, सबसे दो क्या है? पैस्टरलिज्म है, ठीक है, प्लस हंटिंग एंड गैदरिंग है. फाइन. So which animals were the pastoralists rearing? All right, so the pastoralists were rearing animals like horses, sheep, goat, cattle and camel. Okay, so हॉर्सेस क्यों रेयर कर रहे हैं ये आगे जाके हमें पता चलेगा, बिकॉज हॉर्सेस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है? लाइक हॉर्सेस, देन देयर इज sheep, goat, cattle and camel, ठीक है? So these were what? These were some of the animals which they were rearing, ठीक है? Oh, sorry. Okay, so these were what? These were some of the animals which they were rearing, ठीक है?
See guys, when we're talking about the economic activity, we also have to understand one more thing. We also have to understand the kind of area in which they were living, fine? So please understand कि उनका जो area है वो कौन सा है? That is the area of Central Asia, fine? Now Central Asia is obviously a diverse, you can see it has diverse landscape just like we have, है ना? जितना diverse हमारा landscape है उतना ही diverse उनका है. It's just that we have, you know, like हमारा भी आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ही है, ठीक है, बट वी हैव ऑल द सीजन्स, राइट? दे हैव ओनली हार्श लॉन्ग विंटर्स एंड वेरी ब्रीफ समर्स, ठीक है, बहुत छोटे समर्स होते हैं उनके, फाइन. सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एक्टिविटीज दैट दे वर डूइंग, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो the kind of area that they were living in, fine. So pastoralists तो ये काम करते हैं, ठीक है. हंटर गैदरर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? So hunter gatherers were humble compared to pastoralists. What do you mean by that? मतलब अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो हंटर गैदरर्स जो है वो एक छोटे, मतलब एक हल्का सा नीचे पोजीशन पे है एज कंपेयर टू द पैस्टरलिस्ट, ऑलराइट? सो पैस्टरलिस्ट आर इकोनॉमिकली मच रिचर एज कंपेयर टू द हंटर गैदरर्स, ठीक है. एंड दीज हंटर गैदरर्स वुड लिव साउथ ऑफ पैस्टरलिस्ट ओके, ठीक है. क्या करेंगे ये? साउथ ऑफ जो है, जहां भी पैस्टरलिस्ट रह रहे हैं उसके साउथ में रहेंगे ये, फाइन. एंड दे वर मोस्टली लिविंग इन द साइबेरियन फॉरेस्ट बिकॉज दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड एनिमल्स, ठीक है. So since we have discussed the economic activity, it is also very important to understand the area in which they were living, ठीक है. So क्या होगी इनकी ज्योग्राफिकल लैंडस्केप? चलिए हम वो देख लेते हैं, ठीक है, फाइन. So they had the snow-capped alpine mountains in the west, just like we have the Himalayas in the north. So they had okay, so they had what? They had alpine mountains in the west, all right. What else? They had arid Gobi desert in the south, fine. So जैसे हमारे पास थार का रेगिस्तान है वैसे ही they have the Gobi desert in south, okay. अगर हम rivers की बात करें, so they have two rivers which is Onon and Silinga, okay. ये दो rivers हैं जो उनको drain कर रही हैं, fine. Just like we have Ganga and Yamuna, fine. They have what? They have Onon and Silanga, okay. So this is how they were living. And guys, please understand कि अगर आप ये जो भी geographical expanse और जो भी geographical landscape देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा that the people really had harsh, long winters and very brief and dry summers, all right. So that is why it was very difficult for them to, you know, practice agriculture, ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा? हमने इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत वेल सूटेड है टू द काइंड ऑफ लैंडस्केप दैट दे वर लिविंग इन, फाइन, ऑलराइट. नाउ so from the landscape also we can come to the conclusion that they had extreme long winters, okay. So अगर हम क्लाइमेट की बात करें, और बहुत ड्राई और ब्रीफ जो है वो समर्स हुआ करते थे, फाइन, ठीक है.
तो इससे क्या होगा? फाइन. सो देखिए, अब बहुत ब्रीफ और ड्राई समर्स हैं, देन ऑब्वियसली यू कैनॉट बी एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी गाइस. ठीक है, आप एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लॉन्गर समर एंड यू नीड टू हैव लाइक wet summers, isn't it? You need to have rainfall in the summers, okay? Because otherwise you're completely dependent on man-made irrigation, which would have been difficult for them, okay? So that is the reason why they were not able to practice agriculture. And because they were not able to practice agriculture, they practiced these two economic activities, ठीक है? और ये दोनों ही economic activities इतनी strong नहीं है that they would be able to sustain huge populations, है ना? ये छोटे populations को sustain कर सकती हैं, but they would not be able to sustain huge populations, and that is the reason why you will see no cities and empires in the area. आपको सिर्फ छोटे छोटे ट्राइब्स जो हैं वो ही नजर आएंगे, आपको बड़े बड़े सिटीज या एम्पायर्स जो हैं वो नजर नहीं आएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली द पॉपुलेशन वाज नॉट दैट ह्यूज दैट दे कुड हैव कंट्रोल्ड और दे कुड हैव एस्टैब्लिश्ड सिटीज एंड एम्पायर्स. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े पैमाने पे चीजों को मैनेज कर सके. ठीक है, ऑलराइट. Okay, so the Mongols traveled with their huts in search of better pasture. ठीक है, फाइन. चलिए, ये तो हमने क्या देखा गाइस, ये हमने एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देखा इनका कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, कैसे एरिया में रहते थे, क्या कर रहे थे. अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम फोकस करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. ठीक है, गिविंग यू 5 मिनट्स, इसको फटाफट से टेक डाउन कर लीजिए. ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. 26 हो रहा है, दिस शुड बी डन बाय 31. ओके, आई एम श्योर दिस इज डन. So now, अब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये तो हमने इनकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह जो है वो कवर की हैं. नाउ वी मूव ऑन टू सी हाउ दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड देन पॉलिटिकली. ठीक है, चलो. सॉरी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वी विल टेक अ लुक एट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ठीक है. अब आप मेरे से पूछेंगे मैम सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या ही होगा, ट्राइब्स है, इक्वल होंगे, ट्राइबल लीडर होगा, चीफ होगा, यही होगा, है ना? बट नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है. चलो हम वो देखते हैं. ठीक है, alright. So as I told you, language and ethnic ties is what bonded the Mongols together. Fine, but understand that they are living in an area where resource is scarce, isn't it? Resource जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, it's quite scarce देखा जाए तो. Fine. So as a result, the society was divided into patrilineal lineages. ठीक है, let's explain this, don't worry. Society इसका क्या मतलब है, देखो. पैट्रिनी क्या होती है, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट. पैट्रिनी बेसिकली मीन्स दैट व्हेन यू ट्रेस योर डिसेंडेंट्स from your father's side, all right? Like for example, my name is Nicky Sinha, right? Sinha जो surname है वो मेरे father का है, that is not my mother's surname, right? So how am I being identified? मेरी identification किससे हो रही है? मेरी identification हो रही है मेरे father से, right? I am being identified from whom? I am being identified
from my father, right? So मेरी identification कैसे हो रही है? It is happening from where? It is happening because of my father, ठीक है? So that is what is known as your patrilineal identification. अगर हम economic terms में बात करें, तो it simply means that your property is going to be transferred from your father to the son and then to the grandson, like that, ठीक है? तो यहाँ पे भी because resource was scarce, there were certain families in the tribal setup only who would have controlled a greater amount of resources, ठीक है? So there were families which were richer, which were larger, and they had control over more resources, ठीक है? So families had greater access to resources, मतलब कुछ ऐसे खानदान थे जिसमें क्या था, जिनको better access था resources का, they had better, you can say, क्या कहते हैं, हाँ, better resources थे, तो हाँ कह सकते हम कि they were a little rich, okay? So the richer class practiced what? They practiced patrilineal lineages, which means what? Which means whatever resource they had access to, that is going to be transferred within their family and not the tribe, ठीक है? तो जो भी उनके पास resources हैं, वो family में ही transfer होंगी, ठीक है? वो tribe में transfer नहीं की जाएंगी, okay? So if I have land, I will give it to my son or, you know, to my grandson, but not into the tribe, ठीक है? Fine. So obviously when they were rich families, they would have more followers and they had a lot more influence in the local politics, ठीक है? So क्या था? They had okay, they had more followers and they had a lot more interest, where they had a lot more interest in the local politics, ठीक है? और influence होता था इनका local politics पे, ठीक है? So, you know, sometimes natural calamities would basically pitch the tribes against one another. अब for example, मान लो कि बहुत ज़्यादा snow हो चुका है, ठीक है? मान लेते हैं कि ये मेरा area है, fine. This entire area is covered with snow, fine. This area is also covered with snow, okay? अब सिर्फ यही एरिया रह गया है, ठीक है? So don't you think that all the tribal members are going to fight amongst themselves so that they can have control over this only free area, right? Why? Because the rest of the area is covered with what? Rest of the area has been covered with snow, है ना? So यहाँ पे भी same चीज हो रही है, that sometimes natural calamities, periodic natural calamities, would force the families to forge further afield, leading to conflict over pasture lands, ठीक है? So ठीक है, तो इससे क्या होता था, जो फैमिलीज है ना गाइज, उनके बीच में भी कभी कभी जो है वो झड़पें हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी. व्हाई? बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द ऑलरेडी स्केर्स रिसोर्स. देखो रिसोर्सेज जो है वो ऑलरेडी स्केर्स हैं, ठीक है, और जब नेचुरल कैलामिटी आएगी तो उस वजह से, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी, द रिसोर्स इज गोइंग टू बिकम even more scarce, isn't it? It's scarcer. So that is what they're talking about. So this would result in conflict. Fine? Okay.
So groups of families would occasionally ally for the purposes of what? For the purposes of better access to resources. So what would they do? They would basically form confederacies. I'll explain this. ठीक है, कॉन्फिडेंसीज का मतलब क्या होता है? देखो, मान लेते हैं कि 10 ट्राइब्स हैं, ठीक है? ऑफ दिस 10 ट्राइब देयर आर 2 फैमिलीज. Okay, so there are 10 tribes and there are 2 families which are rich. ठीक है, फाइन. सो अब जब फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी तो क्या होगा? दीज 2 families they have access to better resources, isn't it? उनका better resources को access है. So these 2 families are already fighting amongst themselves. Why? Because they want to have a better access to already scarce resources. है ना? ठीक है? इनको क्या चाहिए? इनको better access चाहिए. Okay? तो क्या होता था? अब मान लो कि family 1 है. Okay? And then you have family 2. Fine? अब देखो गाइस, ये समझो कि इनके पास रिसोर्स पहले से है, लेकिन बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी दे आर ऑल्सो फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स. व्हाई? क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज. बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी रिसोर्स जो है वो कम है. ठीक है, तो जब ये रिच फैमिलीज अगर लड़ रही हैं तो सोचो कि ट्राइब्स का क्या होता होगा. ठीक है, tribes obviously would have no access to resources, isn't it? When the rich people are fighting for resources, do you think गरीब की यहाँ पे कोई भी बिसात है? Do you think the poor people would have any which way that they could get access to resources? Not really, isn't it? So you know what would they do? The other tribes which were not so rich, they would basically join the either families. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लाइक इन अलायंस. फाइन. सो सपोज 4 ट्राइब जो है वो इनके साथ मिल गई फैमिली 1 के साथ. फाइन. other 4 tribe is basically met with family 2. Okay, and they have formed a confederacy. All right, so confederacy is this only when you form a loose kind of an alliance. Fine, and this is purely for economic gains. Okay, जब आप एक लूज काइंड ऑफ अलायंस फॉर्म करते हैं बट ओनली एंड ओनली फॉर इकोनॉमिक गेन्स, दिस इज नोन एज योर कॉन्फेडरेसीज. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि दे वुड लाइक align themselves with families. Okay, जो rich families हैं उनके साथ align करेंगी. Okay, the families also now have more manpower, they have more support now. Fine, they would form confederacies and then they would fight amongst themselves for better access to resources. ठीक है, कि मान लो कि 2 लोग लड़ रहे हैं. ठीक है, और उसमें जो बचे कुचे लोग हैं वो अपने अपने साइड्स को पिक कर लेते हैं. फाइन, जैसे कि okay, let me give you an example here. This is an example from Pakistan's politics. So जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वहां पे 2 कैंप्स हैं, है ना? एक शहबाज शरीफ वाला कैंप है और एक इमरान खान वाला कैंप है. सो यस, शहबाज शरीफ एंड इमरान खान आर फाइटिंग. एक दूसरे से तो वो लड़ ही रहे हैं. पीपल ऑल्सो हैव चोजन देयर कैंप्स, राइट? People have joined either the Imran Khan camp or they've joined the Shahbaz Sharif camp, and now they are also fighting amongst themselves. लोग भी लड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कैंप्स को बिलोंग करते हैं. दिस इज व्हाट अ कॉन्फेडरेसी बेसिकली मीन्स. ठीक है, तो ये क्या है गाइस? दिस इज देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. फाइन, नाउ वी टेक अ लुक एट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके,
सो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो चंगेज खान, ऑलराइट, as he is written as Genghis Khan. सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो भी किस पे डिपेंड करता है? सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडरेसीज, ठीक है. सो चंगेज खान, he had formed this big confederacy of Mongol and Turkish tribe. Okay, Genghis Khan ने क्या किया? He formed a big confederacy of Mongols and Turkish tribes. Okay. ठीक है, और इनकी जो कॉन्फिडेंसी थी, इट वाज एक्चुअली वेरी बिग, है ना, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, सॉरी, बहुत बड़ी कॉन्फिडेंसी थी, फाइन. और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, आई डोंट नो, somehow we will see how he is organized it, don't worry. So the political system was somehow so durable that it could survive even after Genghis Khan's death. ठीक है, चंगेज खान के डेथ के बाद भी ये सर्वाइव कर गया था, फाइन. So it was stable enough to counter these huge armies of China, of Iran, of Eastern Europe as well. Fine. मतलब आप सोचो कि कितनी strong इनकी confederacy जो है वो रही होगी कि they were able to, मतलब सोचो एक नोमैडिक एम्पायर के लिए इतने बड़े बड़े एम्पायर्स को टैकल करना कितना मुश्किल रहा होगा, बट येस दे वर एबल टू डू सो. देयर कॉन्फेडरेसीज और देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज सो स्ट्रांग दैट दे वर एबल टू टेक ओवर द सुपीरियर्स लाइक चाइना, ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप एज वेल. ठीक है, सो मतलब ना सिर्फ इन एरियाज को डिफीट किया है, ठीक है, बट दे हैव डन व्हाट, दे हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन दीज एरियाज. ओके, फाइन, ऑलराइट, ओके. सो ना गाइज, यहाँ पे एक चीज हमें थोड़ी सी समझनी है. ओके, तो यहाँ मैं इसके अलग से नोट्स नहीं दे रही हूँ, यहाँ मैं बस आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ. सो देखो, क्योंकि हम ऑलरेडी मारी को लेकर के डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए आई डोंट थिंक मुझे अलग से आपको यहाँ पे समझाने की जरूरत है. So I'm just having a normal discussion. Fine? Okay. देखिए, so हम क्या जानते हैं that the Mongols are what? They're nomads, right? But if you take a look at here, if you take a look at the names which I've written here, so I have written China, Iran, Eastern Europe, right? तो मैंने यहाँ पे ये नाम लिखे हैं. So these countries that we're talking about, they were not nomads, guys, isn't it? They were full-fledged empires, right? So how is it that they had contacts with one another? है ना, वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो कैसे मेंटेन कर रही हैं? फाइन. So even though the social and political organization of the Mongols and Chinese and Iranians varied, not just varied, they were poles apart from each other, but इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कनेक्शंस नहीं थे. These societies were not foreign to each other. They had trade relations with each other. ठीक है, उनके क्या थे, उनके अपने अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे. फाइन.
Now, you all know that the area of Central Asia was really scarce in resource, okay? But whatever they had, they would trade it. और trade कैसे है? Barter system पे है, fine? They would trade it with whom? They would trade it with the settled Chinese population, fine? Chinese जो है वो settled हैं, they have a full-fledged empire going on. So nomads क्या करेंगे? अपनी चीजें जो है वो उनके साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है? The trade obviously has to be mutually beneficial, okay? So what all was coming from China? China से क्या क्या चीजें आ रही थी? Agricultural produce, iron utensils was coming from China, all right guys, and horses and fur and animals which have been trapped during the hunting season, they were being exchanged with China, okay? China से क्या चीजें आ रही हैं? Agricultural products, all right? और दूसरी क्या चीज आ रही है? आपके यूटेंसिल्स, आयरन यूटेंसिल्स आ रहे हैं. और यहां से क्या जा रहा है? मंगोलिया से क्या जा रहा है या सेंट्रल एशिया से क्या जा रहा है? दे आर सेंडिंग देम प्रोडक्ट्स लाइक फर, हॉर्सेस and whatever animals that they have been able to hunt, ठीक है? But please try to understand कि जैसे मारी में this trade was not without conflict. Similarly, here also the trade was not without conflict. दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो पूरी कोशिश करते थे. Both the partners tried to maximize their profits, okay? Yes, they tried to maximize their profits, fine. This could result in skirmishes as well. तो कभी कभी इनके बीच में जो है वो लड़ाई भी हो जाती थी, fine, ठीक है? So, yes, हम क्या बात कर रहे थे? So I was telling you that both the parties, they would try to ensure what? They would try to ensure more profits at the expense of the other party, right? So this would result in military skirmishes between them. अभी military skirmishes में ऐसा नहीं है कि सिर्फ Mongols जीते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ Chinese जीते थे, fine? Yes, the Chinese people were a little vulnerable. Why? Because they were settled, they were sedentary, they were at one location, right? So it was very easy for the Mongols who were nomads, who kept moving from one location to another, to loot and plunder them, है ना? उनकी चीजें बर्बाद करने में, उनको लूटने में, उनकी सिटीज को प्लंडर करने में उनके लिए बहुत आसान होता था, फाइन, isn't it? And the nomads, इनके पास एक और एडवांटेज ये था कि as soon as they would attack, ठीक है, चाइना को उन्होंने अटैक किया, फाइन, they know where the locations are because the people are not going to go anywhere from there. But when the Chinese people wanted to attack, they would have no idea where the nomads are located, है ना? कि nomads की location क्या है, वो उनको पता ही नहीं होती थी, fine. So they would find it really difficult to attack. But ऐसा नहीं है that China did not have an upper hand. Yes, there were times when China also had an upper hand. So there were times when the nomads might have been in a disarray. There could have been like a natural calamity, ऐसा कुछ हो सकता है. In that situation, China would have an upper hand, guys, है ना? China का क्या रहेगा? China का upper hand रहेगा और China जो है वो इन पे अटैक करेगी, ठीक है? लेकिन हाँ, आप एक बात समझ के रखिए कि there was a constant conflict, fine. Throughout history, China suffered extensively because of this nomadic intrusion, and as early as the 8th century BCE, they started building fortifications to protect their subjects. और ये fortifications जो है वो बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि it came to be known as the Great Wall of China today. तो आप समझ सकते हैं कि Great Wall of China क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया था. It was constructed to protect the people of China. ठीक है, मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड कर देती हूँ, फिर आप इसको टेक डाउन कर लीजिएगा और फिर हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर आगे बढ़ेंगे.
ओके, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी वो मैंने कर दी है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि जो भी ट्रेड हो रहा था, so that trade was not without conflict, ठीक है। So both the parties, be it China or be it Mongolia, they would try to maximize their profits, all right? और इस चीज से क्या होगा? This would result in skirmishes, fine? Now both the parties would have upper hand at some point of time. So, but most of the time it was the nomads who had an upper hand because the Chinese people were settled communities, right? So the nomads knew their locations, the nomads knew their hideouts, okay? So it was very easy for the nomads to attack them, to loot and plunder them. But when the Chinese people tried to do so, they had no idea of the location of the nomads, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कभी upper hand नहीं होता था. That is the Chinese people. Yes, suppose there was a natural calamity and the nomads were in a little disarray. In that situation, Chinese जो हैं वो उस चीज का advantage ले सकते हैं, ठीक है? But throughout history, China had to suffer from this, nomadic incursion, so much so that they started building fortifications early in the 8th century. Okay, 8th century BCE से ही उन्होंने fortifications जो हैं वो बनाना start कर दी थी, fine. So this resulted in the formation of Great Wall of China, ठीक है? So I'm sure this is done. All right. तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. So I'm not giving you notes right now, but just discussing this. Fine. So we'll just discuss a little bit about the career of Genghis Khan, right? Who was he? What was he? What has he done? All of that. ठीक है? चलिए. So when was Genghis Khan born? He was born in 1162. Fine. Near Onon River. Fine. And what was he named as a child? He was named Temujin. Okay. And he was the son, so who was his father? His father was Yasuge, and he was the chieftain of what? He was the chieftain of the 𝐾𝐲 tribe. ठीक है? जैसे कि जो मोहम्मद है वो कुरैश ट्राइब को बिलोंग करते थे, फाइन. सिमिलरली ही बिलोंग टू द 𝐾𝐲 ट्राइब. ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत जो नोट्स है ना वो कर ही लेते हैं. वी हैव टाइम. चलो. बर्थ 1162, प्लेस कहाँ पे पैदा हुए थे? नियर ओनोन रिवर. ठीक है. नेम क्या था? ही वाज नेम्ड एज Temujin. Fine. Father's name, I know ये बहुत ही weird लग रहा होगा, but I just wanted to simplify it for you. ठीक है. ऑलराइट. मदर का नाम क्या है? मदर का नाम है ओलुन इके. ठीक है. ऑलराइट. So basically what happened is his father, right? His father was murdered at a very young stage. Okay, तो उनकी father की जो death है वो बहुत young age में हो गई थी, and this death was not natural. Obviously, he was murdered. Fine. So he actually had to live a life of great hardships. His mother had to live a life of great hardships because उनकी माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उनको, as in Genghis Khan को, and to bring up his step brothers and sisters. All right. So she had a very harsh life.
she had a very, you can say, bad life after the death of her husband, and she had to work really hard to bring up और बेसिकली परवरिश करने में उनको बहुत दिक्कत हुई थी किसकी, तेमुजिन एंड हिज ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेट्रा. फाइन. Now, the following decade was full of reversals in the sense, जो उसके बाद के 10 साल आए थे, in that Temujin had to suffer a lot. So earlier it was his mother who was suffering, and now it was Temujin who was suffering a lot. And how was he suffering? So what basically happened? Temujin was captured and then he was enslaved. Fine. और soon after his marriage, और जैसे उनकी शादी हुई, his wife's name was Borth, she was then kidnapped and Temujin literally had to fight to recover her. मतलब एक तरह से एक हीरो की तरह जो है उनको फाइट करना पड़ा, किस लिए? ताकि उनको रिकवर कर सकें. ठीक है, फाइन. So during this, during these years of hardship, he has become a political master, guys. ठीक है, कैसे वो political master बना, चलो हम थोड़ा सा देखते हैं. I will give you notes regarding this, don't worry. So during this, periods of hardship, he has made some very important friends. Okay, so he had made friends with Jamuka, who was also his blood brother. ठीक है, ब्लड ब्रदर का मतलब होता है सेम ब्लड शेयर करना. फाइन. सो ही वाज हिज ब्लड ब्रदर, मतलब उसके अपने भाई जैसा होता है ना, वैसा. ठीक है, सो ही वाज हिज ब्लड ब्रदर. फाइन. ब्लड ब्रदर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ, so basically blood brother means that you might not have the same mother but you have the same father, right? स्टेप सन्स और स्टेप, उसमें क्या होता है कि आपके मदर और फादर जो है दोनों ही डिफरेंट होते हैं, isn't it? Right? But here what happens is step brothers and sisters में, but here what happens is blood brother में मतलब क्या है कि husband जो है, मान लो वो एक ही है and he has multiple wives, all right? So the children born of those wives are blood brothers and sisters of each other. That means they have same father but they have different mothers. ठीक है? So what he has done here is he has forged some very important alliances. Okay, so his first alliance was Jamuka, who was his blood brother. Fine. Then he also restored his old alliances with the 𝐾𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢 ट्राइब. जिस ट्राइब के उसके फादर चीफटिन थे, उनके साथ भी उसने अपने रिलेशनशिप्स जो है उसको मेंड किया. ठीक है, फाइन. एंड देन ही फॉर्म्ड एन अलायंस विथ ओंग खान, हु वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज फादर. फाइन. अब आप सोचोगे कि इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, अलायंसेस ही तो फॉर्म कर रहा है. लेकिन अब आप देखना कि इन्हीं अलायंसेस का इस्तेमाल करके ही इज गोइंग टू किल ऑल ऑफ दीज पीपल. Fine. He's going to first use Jamuka to kill, he's first going to use Ong Khan to kill Jamuka, and then he's going to kill Jamuka as well. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले ओंग खान का इस्तेमाल करके जमुका को मारेंगे. फाइन. और उसके बाद ओंग खान को भी मार देंगे. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट दिस वाज हिज पॉलिटिकल मैन्यूवर, कि कितना स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, he has formed alliances. What alliances? So he has formed alliances with, the first alliance that he formed was Jamuka. ठीक है, then he had restored his old alliances with 𝐾𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢, the tribe as well, and then he had also formed alliance with Ong Khan. ठीक है, तो यहां तक का जो भी है वो मैं लिख देती हूँ, और इसके बाद का जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.
अब अलायंसेस जो है वो किसके साथ फॉर्म की है? सबसे पहला अलायंस जो फॉर्म किया है वो है विथ, हाँ, विथ बोगुरचू, दैट इज द नेम, आई एम सॉरी, मैंने फर्स्ट अलायंस जम्मू का बताया था, नहीं, इट्स बोगुरचू, ओके। सो फर्स्ट अलायंस विद इज विथ देन विथ जम्मू का, ठीक है, एंड देन विथ ओंग खान, ठीक है। इन सब के साथ क्या करा इसने? अलायंसेस जो है वो फॉर्म की हैं, ठीक है, ऑल राइट, ओके। अब इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, फाइन। तो काफी कुछ देखा जाए तो हमने कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड द सोर्सेस, ऑल राइट, हमने सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। वी हैव ऑल्सो डन लिटिल बिट ऑफ करियर ऑफ चंगेज खान, एंड इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई जस्ट कॉल फॉर द टैब टू सी इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट चेक द टैब, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, आई थिंक वील एंड द सेशन ओवर हियर, फाइन, एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो, ओके, एंड वील कंटिन्यू विद दिस, और कोशिश करेंगे कल हम ये चैप्टर जो है वो फिनिश करने का, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी ओवर हियर, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑल. I will now see you in the next lecture. Till then, please take care. Thank you. Bye-bye.